जी, शाश्वत योग सभा की ओर से मैं स्मिता स्नेही आप सभी सम्मानित श्रोताओं का हृदय से अभिवादन करती हूँ और आज के इस सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हर गुरुवार की तरह आज का सत्र भी बहुत खास और अनूठा है। आज के इस सत्र का विषय है योग पेशेवर परीक्षा के बारे में उन्मुखीकरण और इस विषय के वक्ता हैं हमारे बीच डॉक्टर आलोक भारती जी। डॉक्टर आलोक भारती जी, आपका आज के सत्र में हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप एक योग विशेषज्ञ और भारतीय योग संघ के सदस्य हैं। आपको योग सर्टिफिकेट बोर्ड YCB आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक लीड एग्जामिनर के रूप में 2021 से 2024 के लिए चुना गया है। आपको ICCR द्वारा कराकस वेनेजुएला में योग राजदूत और भारतीय संस्कृति के शिक्षक TIC के लिए भी चुना गया। ये था आपका संक्षिप्त परिचय सर। बाकी आपको बहुत लोग यहाँ अधिकतर लोग जानते होंगे, परिचित हैं सब। और शाश्वत योग सभा के संस्थापक आदरणीय इंद्र नारायण रमन सर, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आत्मवंदन करती हूँ। परंपरा अनुसार हमारे हर सत्र का शुभारंभ, जैसा कि आप जानते हैं, एक सुंदर भजन से होता है। तो आज हम पूजा अजमेरा कोठारी जी के मधुर स्वरों में भजन का आनंद लेंगे। पूजा जी, आपका भी मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू। आप PM गुजरात से हैं। आप एक ज्वेलरी डिजाइनर हैं और संगीत में आपकी विशेष रुचि है। हाँ, तो पूजा जी, आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप भजन से हमारे इस सत्र की शुरुआत करें। पूजा जी। सभी को नमस्ते। मेरा भजन है शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। आदि गुणों का एक्सक्यूज मी ज्ञान योग का दिव्य अनुभव, ज्ञान योग का दिव्य अनुभव शांति में समाया है। शांति की सौगात लेकर कर्म पिता शिव आया है। शांति धाम अपने घर की, शांति धाम अपने घर की राह सबको दिखानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की चाह सभी को, शांति की चाह सभी को मिल जाए शांति वरदान। जन्म से जो भटक रहे हैं, जन्म से जो भटक रहे हैं, देना उनको शांति दान। शांति दा सागर वरदाता की, शांति सागर वरदाता की वाणी सबको सुनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है।
शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है शांति की शक्ति से। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, बहुत ही सुंदर भजन सुनाया आपने। मेरी थोड़ी गलतियां हो गई, उसके लिए आई एम सॉरी। नहीं नहीं, कोई गलतियां नहीं, ये सब तो स्वाभाविक चीजें हैं, तो हो जाती है, और ऐसा कुछ नहीं। बहुत सुंदर आपने सुनाया, और बहुत सुंदर और मधुर आवाज है आपको, वो थैंक यू, शांति का भाव लिए हुए बहुत ही खूबसूरत भजन था, मजा आ गया। थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं आज के सत्र को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर आलोक भारती जी से आग्रह करती हूँ कि वह आज के इस सत्र में अपना विचार रखें और अपना अनुभव ज्ञान से हम सबको साझा करें। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते, थैंक यू स्मिता जी। माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक हम लोग एक दूसरे को कुछ व्यक्ति जानते होंगे, कुछ परिचय होंगे। सर्वप्रथम शांति के बारे में मैडम ने जो संगीत गाई उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, कर्णप्रिय, वेरी सोनरस साउंड, इट वाज गुड। Yeah, am I audible to all? Am I audible? यस सर, यस। Okay, good. आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। Okay, thank you. Yes. Yeah. मैं almost 2016 से इस मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से जुड़ा हुआ हूँ। एज ए टाटा प्रोजेक्ट्स का सर्टिफिकेशन बॉडी है TQ सर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। एज ए योगा हेड में वर्क कर रहा हूँ, और फॉर्चुनेटली I had represent government of India in Sri Lanka 2016, and now I am going to Venezuela for representing government of India in Venezuela as a yoga ambassador. Right now I am working in yoga head in TQ set. She already explained about me and myself. Purpose जो है today's meeting, purpose of this meeting and purpose of my session, why I took this yoga professional examination. I think Hindi English दोनों mix करके चलेंगे, that will be better because थोड़ा सा हमारे लिए दोनों better होगा. Okay, I'm try to as much as possible I will try to speak in Hindi, but certain thing I can't manage, so that I'm पहले ही क्षमा मांग लेते हैं आप लोग से। फर्स्ट ऑफ ऑल, योगा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं लोगों को। दे कांट अंडरस्टैंड प्रॉपरली व्हाट इज द एग्जामिनेशन, व्हाट इज द विजन एंड व्हाट इज द स्कोप फॉर द योगा प्रोफेशनल्स। ओके, देयर आर ह्यूज डिमांड्स इन अब्रॉड, but how to materialize as a certification into opportunity, that is the big thing. Today I will discuss about the certification part and discuss about the what is the scope and how person opt yoga career for the betterment, like the different career they can good earning, good package in the as a yoga career. But some important points they have to understand and inculcate about his mind, that what pre-essential qualification, what should we do, पहले उनको क्या करना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए, और क्या क्या करने से
क्या नहीं करते हैं जिसके कारण वो एज ए योगा सक्सेसफुल कैरियर नहीं कर पाते, एज ए योगा इंस्ट्रक्टर या कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन हो जाता है ना। हमारा जो 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है टाटा में, टाटा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में, तो उसका मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। ऑल्दो योगा का जर्नी तो शुरू से होता है, बिकॉज यूजुअली कहा जाता है कि योगा को आप चुनते नहीं हो, योगा आपको चुनता है। दैट इज द कोर ऑफ द मेन थिंग, है ना। बट योगा आपको चुनता है, तो हमारा एक प्रमुख उद्देश्य होता है कि कैसे हम अपने एज ए प्रोफेशनली उस चीज को मतलब जो है सोसाइटी में हम अपने आप को प्रेजेंट करें विथ द डिग्निटी, with the good earning, and as a career as well, not in India, abroad also. First of all, we will discuss about the steps of the certification. First is the yoga volunteer certificate. आपने नाम सुना है, सबने सुना है योगा volunteer certification? Yes sir. Yes, good. योगा वॉलेंटियर सर्टिफिकेशन में क्या होता है, इफ आई हैव परमिशन टू शेयर माय स्क्रीन, या आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. Yes sir, you can. Yes, I am sharing my screen, and so I can describe you better. Just this is a yoga volunteer certification. Okay, in the certificate there is a no eligibility criteria. That means age no bar, anybody can get this certificate. Before getting the certificate, the candidate must have enrolled themselves in the YCB website. Okay, the syllabus is also there. Okay, this courses, in fact, this is the duration of course is a 36 hours as mentioned in the syllabus of the yoga volunteer. Okay, usually this certification yoga volunteer is very much popular in the school boy children. Okay, not school boy children, as well as the housewife, corporate, in corporate sector there is huge demand. This is the initial introduction about the yoga. Those who are not much about the yoga, they only understand the physical level asana parameter. They want to the more into the yoga part. They can get this certificate. Definitely it will be very beneficial for the career point of view, career perspective as well. This is the 36 hours of the courses, but 80% of attendance is essential. In this course for the yoga volunteer, you don't need to appear for any examination. Okay, only you have to attend the 36-hour courses. Okay, by this courses is undergone by the PRCP, that is the TQ cert. You can contact to TQ cert as well, Tata Projects Private Limited, or you can contact me also. And if you candidate undergo training for the 36 hours, they get the certificate of the yoga volunteer. Okay, this is the thing. And the yoga volunteer certificate syllabus is that already just you see the syllabus, meaning history, development of yoga, school of yoga, fundamentals of yoga, yogic practices for health and wellness, general guidelines for yoga practices, yoga principle of food, and the practical aspect. What is the concept of the recitation of the pranava hymns, and the sadkarma, and some kriyas, yogasana, pranayama, and dhyana, and the classes related to the life management and preventive health. I suggest this particularly 36 hours courses for housewife and
For the under 10 candidate, under 10, 12 candidate, those who are giving the examination, this introduction about the yoga, that will be the very good. In fact, yoga volunteer will be the good for their career. This is the primary introduction of the understanding of the yoga. Those candidates want to upgrade themselves, they should go for yoga protocol instructor. Just I am offering a new sharing a new syllabus, that is a yoga protocol instructor. Is the visible to you? I hope that will be visible to you. Yeah. Yes, sir. Yes, this is a, in all certification there is a no age limit, because it is a non-formal education. This is not the formal education like the MA, BA or other else. It is a completely non-formal education. Anybody can attempt this certificate and get the certificate, can give the examination, and if they pass, get the certificate. Important thing, just you see the value of this yoga protocol instructor is 200 hours and 3 months as a part, not less than 1 month as a full-time course. That means, as an institution point of view, okay, any institution can give the 200 hours training program. If any candidate get the certificate, has the equivalent to the 200 hours and 3 month courses. अगर 3 month का कोई course करके आ रहा है, तो this is equivalent to that. This certificate is equivalent to that part, equivalent to this 200 hours courses. This is the, I'm just looking to the PRCB perspective. Now I'm describing about the institution perspective. Institution perspective, if certified institution by the YCB, Yoga Certification Board, they should run the 200 hours courses and follow the syllabus. They conduct the examination. If the candidate will pass, and they will get the certificate. Just to understand the marks distribution about the yoga protocol instructor. Yoga protocol instructor, just you see, it is a 200 marks. Okay, 200 marks, 60 is the theory and 140 is the practical. Okay, 60 is the theory, that means 60 MCQ will be there. They should be attempt this question paper, 60 multiple choice question, and 140 questions according syllabus are there. Introduction to yoga and yogic practices, introduction to yoga text, yoga for health promotion. This is the 3 section. Each section marks is distributed equally, 20, 20, 20. That means 20 question will be comes from the unit 1, and 20 question will be asked from unit 2, and 20 question will be asked from unit 3. This is the marks distribution for the level 1. Usually now we are not telling level 1, now it is called yoga protocol instructor. Okay, 60 मार्क्स का इसमें थ्योरी का आता है, प्रैक्टिकल का क्या आता है, 140 आता है. प्रैक्टिकल सिलेबस इज देयर, डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट, प्रेयर, योगा षटकर्मा देयर, सूक्ष्म व्यायाम देयर, yogic सूर्य नमस्कार देयर, आसना देयर, and the breathing pattern there, sectional breathing there, and the some pranayama related concept are there. Okay, Ashtakumbhaka there, Bandha concept, mudra concept, and the how sort of the meditation, and the since it is a professional things, so that the teaching skill is the important part of this certificate. So as a teacher, how you will teach, how you efficient you will be as a yoga instructor, that importance, and that plays a major role in this examination. Practical examination is 140 marks. This is the syllabus. In fact, I will share this syllabus to all the participants. Okay, now I come to the yoga wellness instructor.
pattern is the same followed by the level 1. Yoga protocol instructor and yoga wellness instructor is the more or less is the same pattern of examination, but the depthness of the question is higher than the yoga protocol instructor. That means अगर आप योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर और योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर में अगर कंपैरिजन करेंगे तो योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर का जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो इन कंपैरिजन टू योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर थोड़ा सा टफ होता है ना, थोड़ा डेप्थ में पूछा जाता है। तो पैटर्न सेम है, 200 मार्क्स का है, 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, 60 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होता है और 140 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है। इसका सिलेबस दिया हुआ है, उसके आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 यूनिट है, 3 यूनिट में क्या होता है, रिटन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखना चाहूंगा। 3 यूनिट है, इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक प्रैक्टिसेस, वो 20 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आएगा। मतलब 20 मार्क्स मींस 20 क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से आएगा। इंट्रोडक्शन टू योगा टेक्स्ट 20 मार्क्स इस यूनिट से आएगा। योगा फॉर वेलनेस 20 मार्क्स आएगा। कंप्लीटली 60 क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आएगा। थ्योरी में 60 क्वेश्चन आएगा और दीज आर द एमसीक्यू, नो नेगेटिव मार्किंग। एंड प्रैक्टिकल में क्या है, डिमोन्स्ट्रेशन का जो पार्ट होता है 80 मार्क्स का होता है, टीचिंग का जो पार्ट होता है 40 मार्क्स का होता है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज जो होता है 10 मार्क्स का होता है और फील्ड एक्सपीरियंस 10 मार्क्स का होता है। यहाँ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आई थिंक डिमोन्स्ट्रेशन पार्ट क्या होता है, आसना किस तरह से आप डिमोन्स्ट्रेट करते हैं। टीचिंग स्किल ये होता है कि आपका हाउ इफिशिएंट एज ए इंस्ट्रक्टर, हाउ concisely, how to the point, how you are specific for the instructed parameter. This is the called the teaching skill, one part. Second part, according to the mass population, suppose करते हैं अगर किसी के साथ कैसे 1-to-1 या many to 1 का interaction होता है, how you are dealing with the candidate, it matters for the teaching skill. Now we come to the application of knowledge. Application of knowledge is very important. That means you have the knowledge of the yoga, but how your knowledge is, how the content is applicable for your student point of view. How good for the delivering point of view. कितना अच्छा से, कितना बेहतर से आप अपने कंटेंट को अपने स्टूडेंट के सामने रखते हैं, ये इस पार्ट में आता है। प्रैक्टिकल पार्ट में आता है। थ्योरेटिकल पार्ट में क्या होता है, थ्योरेटिकल पार्ट इज द ओनली द कंटेंट बेस। आपका जो सिलेबस लिखा हुआ है जिसमें उपनिषद भी है, हिस्ट्री उपनिषद है, उसके बाद सांख्य दर्शन है, पतंजलि योग सूत्र है, हठ प्रदीप का है, घेरंड संहिता है, ज्ञान योग सूक्ष्म व्यायाम है। और उसमें क्या है जो आपका उपनिषद में होता है, कठोपनिषद के बारे में आपको जानना है, दैट इज। बट कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद और इसके बारे में बहुत डेप्थ में नहीं जानना है, बट एट द सुपरफिशियल लेवल पे आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। गीता के बारे में होना चाहिए। गीता में एक लिमिटेड स्पेसिफिक डायमेंशन है, उसका उस लिमिटेड श्लोका है, उसका सेकेंड चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का 1 to 12, सेकेंड चैप्टर का पतंजलि योग सूत्र में है। और गीता में कुछ सेलेक्टेड श्लोका है, सेकेंड चैप्टर का कुछ श्लोका है, 8-9 श्लोका है, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपका साइकोलॉजी से होता है, साइकोलॉजी से और एनाटॉमी फिजियोलॉजी से और आयुर्वेदा से, ये इसका सिलेबस है जो कि आपका थ्योरेटिकल पार्ट में मेजर रोल प्ले करता है। सेम एज यूजुअल जैसे लेवल 1 में जो हमने डिस्कस किया था योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर में, सेम मोर और लेस उसी कॉन्सेप्ट पर इसमें भी होता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो होता है। इसमें भी षटकर्म है, प्रेयर है, सूक्ष्म व्यायाम है, सूर्य नमस्कार है, योगासना है और ब्रीदिंग, सेक्शनल ब्रीदिंग, कुंभक के बारे में है
डिमोन्स्ट्रेशन बंधा के बारे में है, मुद्रा के बारे में है, और आपका many different sort of the meditation is also there. Yoga Nidra is the part syllabus in this for the yoga wellness instructor, और अंतर मौन की साधना है, और teaching skills में, that means teaching skills is the core of the professional examination. Same है. Now this is the, we discuss about the yoga protocol instructor, we discuss about the yoga wellness instructor. Now I will discuss about the yoga teacher and evaluator. Yoga teacher and evaluator, just इसमें थोड़ा सा changes है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिर से एक बार एक मेन पॉइंट को फिर से मैं दोहरा दूं आपको, ताकि आपको फिर से रिमाइंड हो जाए. एज लिमिट आप देखेंगे, मिनिमम एज, नो एज लिमिट, दैट मींस देयर इज नो एज बार. एनी कैंडिडेट कैन गिव दिस एग्जामिनेशन. दिस इज द ओपन प्लेटफॉर्म. एनी कैंडिडेट कैन गिव दिस एग्जामिनेशन. ओके, एंड दैट इज गुड फॉर द कैंडिडेट पर्सपेक्टिव. ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है, कोई प्रायर क्वालिफिकेशन नहीं इसमें चाहिए. दैट इज द ओपन प्लेटफॉर्म. Yoga Ministry of Ayush has launched a certification program that is open platform for all. चाहे वो हाउसवाइफ हो जाए या योगा प्रोफेशनल हो जाए, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाए या डिफरेंट किसी भी स्ट्रीम में है, they can give the examination and they can get the certificate. अब देखते हैं इसका थोड़ा सा चेंज है. इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ये डीपर लेवल में इसका सिलेबस है. क्या होता है, जो योगा टीचर क्या होता है, योगा हम लोग डिस्कस किए, योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर और योगा टीचर और इवैल्यूएटर जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज द टफर देन ऑल. दैट मींस योगा प्रोटोकॉल, योगा वेलनेस से ये ज्यादा टफ है. इसमें 80 क्वेश्चंस होता है और टाइम ड्यूरेशन हर एक एग्जामिनेशन के लिए 2 आवर्स होता है, 120 मिनट्स होता है. और इसमें जो है 2 आवर्स में अगर देखेंगे तो थ्योरी में 80 क्वेश्चन रहता है, थ्योरी में 80 एमसीक्यू होता है और प्रैक्टिकल में 120 मार्क्स का रहता है. टोटल कंपोजिट जो होता है वो 200 मार्क्स का रहता है. 200 मार्क्स का रहता है रिटन एंड प्रैक्टिकल. रिटन एंड प्रैक्टिकल दोनों एग्जामिनेशन में आपको यू हैव टू स्कोर 70%. एक पॉइंट मैं भूल रहा था, हर एक एग्जामिनेशन में रिटन एग्जामिनेशन एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, रिटन में आपको 70% चाहिए और प्रैक्टिकल में भी आपको 70% चाहिए. देन यू विल बी सर्टिफाइड प्रोफेशनल. अगर आपको रिटन में 70% आया और प्रैक्टिकल में आप 70% स्कोर नहीं कर पाए तो यू विल बी फेल. ओके, इन केस में क्या होगा, अगर रिटन में पास हो गए और प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो दैट मींस you have to again pay to the PRCB and again you have to rewrite the examination. But one positive aspect is if you pass in the practical examination but fail in the written examination, you will get one chance for the written examination. Because 70%, but you have to score in the both paper individually 70%, not the collectively. 70% थ्योरी में आना चाहिए और 70% जो है प्रैक्टिकल में भी आना चाहिए. नाउ इसमें जो है पहले 3 सेक्शन होता था, इसमें 4 सेक्शन होता है. इसमें फाउंडेशन ऑफ योगा 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क्स का आएगा. इंट्रोडक्शन टू योगा टेक्स्ट जो है 20 मार्क्स का है, 20 क्वेश्चंस आएगा. और योगा एंड हेल्थ से रिलेटेड जो है 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चंस आएगा. टोटल कंप्लीटली आपका 80 क्वेश्चंस होगा. उसी तरह से अगर देखेंगे और इसका प्रैक्टिकल जो है 120 मार्क्स का होता है. 120 मार्क्स का मतलब ये हो गया, जो आपका डिमोन्स्ट्रेशन जो पार्ट होता है 60 मार्क्स का होता है, टीचिंग स्किल 20, इवोल्यूशन स्किल जो है 20 और एप्लीकेशन नॉलेज 10 और फील्ड एक्सपीरियंस 10. नाउ हम 2 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे, इवोल्यूशन स्किल और फील्ड एक्सपीरियंस.
इवोल्यूशन स्किल का मतलब ये हो गया, जो आप एज ए योगा टीचर हैं, तो डेट मीन्स यू एज ए टीचर का मतलब है यू हैव द कैपेबिलिटी टू असेस टू द कैंडिडेट्स। आपके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि यू कैन एलिजिबल एंड यू शुड बी capable for evaluating the candidates also for the level 1, level 2 yoga protocol, yoga wellness, and yoga teacher as well. That means that's kind of evaluation knowledge you should be there. You should be. Now, field experience का मतलब होता है कि as a yoga teacher we opt that, हम इस तरह से मान के चलते हैं कि एज आप योगा टीचर हैं तो आप इस फील्ड में काम कर रहे होंगे, तो डेट मीन्स आपका कुछ फील्ड एक्सपीरियंस होगा, वेदर यू आर सर्टिफाइड, यू आर एसोसिएट विद द मेनी ऑर्गेनाइजेशन, यू कम हियर फॉर द for give the examination and get the certificate. That means you will be recognized as certified yoga professional by the Ministry of Ayush. Okay, although you have the formal degree of the yoga's MA or MSc or a diploma in yoga and a different sort of certification program from the yoga, it is a well respected, it gives you the add-on value. This certificate gives you the add-on value if you have the many certificate in your hands, like the MA or MSc in yoga certificate and diploma, etc. Now, this is the I had discussed yoga protocol, yoga wellness, and yoga teacher. Now I am discussing about the yoga master, which is a master मतलब आप समझते हैं, that means you have the good command over the subject. Teacher means, teacher का मतलब क्या हुआ कि you just communicate, you have the power to communicate. Master, you have the good command over the subject also. Not the one dimension, multi-dimension also. Suppose Patanjali Yoga Sutra, in context of the Sankhya Darshana, in context of the different syllabus is definitely difficult or very depth question will be asked. I will just brief introduce about this this syllabus also, not much today. Okay, if you would be more interested in this yoga master, definitely you can consult me personally. I will give you the guideline. Now, yoga master pattern is the pattern of the examination, because it is a 1600 hours as a course. This is a equivalent to 1600 hours as per the international international point of view. That means if you opt the certificate, you have the certificate, that will be the equivalent to the 16 hours of courses. Okay, the same pattern is there, examination pattern is the same, 200 marks is there, separate 70% pass in theory and 70% you have to get the 70% in the practical, then you will be passed. In case if you fail in the theory and pass in the practical, you will get one chance. Or if you fail in the practical and pass in theory, that means again you have to give the entire fee and you have to give the examination. This is the this process is defined by the Government of India, Ministry of Ayush, NYCB. In this syllabus, philosophical foundation of yoga, principle and practices of yoga in traditional texts, allied science, applied yoga, and 30-30 question. That means this is I think tougher than previous one. 30-30 matlab 120 question will be asked and 2 hours question, and practical marks is reduced automatically. 80 question entire practical का जो है 80 question हो गया. If you understand the pattern of the yoga protocol, yoga wellness, yoga teacher, and yoga master, you understood that if you are growing at the initial level, yoga protocol instructor, if you carefully watch to the syllabus, demonstration skill is more. Okay, but if you go to the yoga wellness instructor,
demonstration skill will be reduced. Marks थोड़ा थोड़ा घटता चला जाता है. In the master, you have the more knowledgeable rather than the practical aspect. Because क्या होता है, योगा demonstrate, योगा protocol instructor, योगा wellness instructor में you should be very pakka on the demonstration point of view. But if you come to the yoga teacher and the master perspective, that means you should be more knowledge than the demonstration point of view. अगर आप demonstration थोड़ा अच्छा नहीं भी कर रहे हैं तो चलेगा, but you should have the proper knowledge about the subject. You have to thorough about the subject and you have the deeper understanding of the subject as well. Not subject में क्या होता है, usually person understood that the yoga का मतलब क्या होता है, जो they only focus on the asana parameter. If they demonstrate asana, they are very happy. I am the yogi and all the things. Yoga certification board, Ministry of Ayush, entire gamut of the entire India को एक umbrella के अंदर ला करके they design the syllabus so beautifully, so concisely. The entire syllabus, or not one syllabus, either Bihar School of Yoga, Kaivalya Dham, or the Morarji Desai Institution, or the S. Vyasa, or the different sort of the institution in India, Patavi Jos, or the Iyengar Yoga styles. So many numbers of techniques and traditions are there. The syllabus made for the understanding of entire traditions. Okay, and syllabus is very scientifically introduced. They don't very Vaishnavi, mentor of the Vaishnavi, introduced this syllabus so beautifully. If you pass the examination, it gives the worth itself. Okay? Now, this is the regular parameter. Now we come to the therapy parameter. I will not give more emphasize on the therapy parameter. Three therapy parameter is also there. Just I will introduce the syllabus to you. This is the yoga assistant yoga therapist. In this syllabus, there is no eligibility, only that eligibility criteria for open candidate. There is no eligibility criteria. 10 plus 2 pass. That means candidate must have the 10 plus 2 pass. इतना होना चाहिए. एज का कोई there is no age bar. Assistant yoga therapy का जो है 400 hours का इसका approximate माना जाता है, और इसमें more जो है anatomy physiology base है. तो those who want to look into the therapy parameter or therapy perspective, they should be very good in the therapy perspective. थेरेपी में जानना ही जानना है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. एट द सेम टाइम यू हैव द गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द योगा टेक्स्ट आल्सो. योगा टेक्स्ट मींस मेन जो योगा टेक्स्ट जो होता है उसको आप मान के चलेंगे कि जैसे हठ प्रदीप का घेरंड संगीता, उसके बाद इसमें आएंगे तो शिव संगीता, वशिष्ठ संगीता, ये हो गया, और इसमें आ जाएगा पतंजलि योग सूत्र, एक भगवत गीता, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी. सिलेबस थोड़ा सा अंडरस्टैंड थोड़ा वास्ट है, बट इट हैज द वेरी कैरियर ओरिएंटेड आल्सो. It has 1.5 years has introduced this syllabus, but it has probable there is a huge demand in the future also for the therapy, and this is the time of the therapy. I am just clearly telling, this is the time of the therapy. There is a huge demand. There is a chance in every state. So many vacancy will become. There is a chance. It depends, although it depends on the government, but there is a chance there is a many vacancy will be come out from the state government also. Now we come to the therapy part. ये जो होता है assistant yoga therapy के बाद आते हैं yoga therapist में आते हैं. Yoga therapist में क्या होता है? This is the upgraded version of the assistant yoga therapy, but in this syllabus you have the very deeper understanding of the anatomy physiology. Syllabus में क्या है? I will not go into much the detail, okay, because
we have lacking the sort by time. So just this is the 100 questions are there, 100 theory and 100 practical. Both parameters you have to pass by 70%. It is definitely little bit challenging also, because if you don't have the understanding of the anatomy and physiology, it is a very challenging for you. But this is the last final upgraded version. This is the therapeutical yoga consultant. Okay, this is the most prestigious certification in the gamut of the Ministry of Ayush, YCB Yoga Certification Board. Very limited person as of now certified this therapeutical yoga consultant as of now, and I hope in future there is a huge demand. Okay, but eligibility criteria, it is medical professional or master in yoga. That is the eligibility criteria. For yoga professional, medical knowledge is required, and vice versa. This is the requirement and eligibility. So that in this case, we just suggest, if you have the medical background or the good understanding, a good understanding of anatomy and physiology, then you can appear for the examination. This is the final examination, and although this is the most prestigious examination, theory is 120 marks, but the practical is the 60 marks. That means you have the more knowledge than the practical aspect. Although practical is a challenging, because they will ask for you the case study, and case study means अगर इस तरह का केस हो गया तो how you will treat to the patient, है ना? तो it is a challenging also. I think this is the entire syllabus or entire format of the yoga certification board professional examination. I would like to take the question and answer rather than the take more longer, because abhi bolenge to it takes long time. So that I will not describe much about this part, therapy part. If you have any question, query, you can ask now, please. सर चैट में है क्वेश्चन. Yeah, kindly ask the question so that I can reply accordingly. Kindly ask the question, please. श्रोताओं से आग्रह है कि सर से अगर कुछ प्रश्न करना चाहें, कोई भी क्वेश्चन हो मन में, तो बेझिझक करें बारी बारी से. जी सर. सर गोवर्धन जी ने पूछा है जी कि ये सारे कोर्सेज जो है ऑनलाइन है, ऑनलाइन ये जो है ऑनलाइन भी अवेलेबल है ना? और दो पैरामीटर मैं आपको बता दूं. एक क्या होता है, where to attend the practicals. अब देखिए, अब थोड़ा सा अभी क्या है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, और ये जो बताया है थोड़ा मैं फास्ट बताया हूँ. हो सकता है कुछ चीज समझ में आया हो, कुछ चीज नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन मैं फिर से एक चीज बताता हूँ. योगा सर्टिफिकेशन पर्सनल सर्टिफिकेशन बॉडी होता है. पर्सनल सर्टिफिकेशन बॉडी में क्या होता है, जैसे TQ सर्ट है, टाटा का TQ सर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, तो वो इट इज ए सर्टिफिकेशन बॉडी. इसमें क्या है, इंडिपेंडेंटली यू कैन गिव द एग्जामिनेशन विदाउट एनी प्रायर. सर्टिफिकेशन बॉडी कांट गिव द ट्रेनिंग. इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर द ओपन कैंडिडेट. जैसे क्या होता है, अगर आपको क्या है, आपको ट्रेनिंग कहीं से लेना है तो आप ले लीजिए और आप यू कैन गिव द एग्जामिनेशन, वी डोंट बॉदर. और सर्टिफिकेशन बॉडी जो होता है, दे डोंट गिव द ट्रेनिंग. बट इंस्टीट्यूशन होता है, जो सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन होता है, तो वो क्या कहते हैं, दे गिव द ट्रेनिंग ऑल्सो. ओके, दे यू कैन कनेक्ट टू द इंस्टीट्यूशन ऑल्सो फॉर द ट्रेनिंग पैरामीटर. और ट्रेनिंग और फीस जो है वो वेरी करता है इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूट. लाइक क्या होता है, एक फोन लेते हैं, एंड्रॉइड का ही फोन लेते हैं, तो वो क्या होता है, सैमसंग का अलग होता है और डिफरेंट कंपनी का अलग होता है, तो सेम तरह का होता है.
it depends upon the branding. Although they are under on the same YCP, Ministry of Ayush, but according to quality and the branding, they're charging the fee. एक क्वेश्चन आपका है, how can we join the courses? Okay, अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो we suggest you for the best courses for you. You can join and you can take my number, and I in person I will guide you. You can contact me personal. I will guide you in the personal level also. Although you are very comfort, kindly see the syllabus. If you are comfortable to see the syllabus, you can give the examination. And those who are the very entering into the yoga field, they don't have much idea about it, they can join the yoga volunteer courses. Yoga volunteer course में क्या होता है, 2000 के आसपास फी लगता है, or only you have to attend the 36 hours of session and you will get the certificate without giving the examination. आपको एग्जामिनेशन भी नहीं देना है और सिर्फ 36 आवर्स में 36 घंटा आपको कोर्स कंडक्ट मतलब अटेंड करेंगे, आपको सर्टिफिकेट पीआरसीबी इंस्टीट्यूट आपको दे देगा. Where to attend the practical classes? For the practical classes on practical classes and the theoretical classes, इसमें क्या होता है, थ्योरी भी यूजुअली क्या होता है, प्रैक्टिकल में कैंडिडेट पास हो जाता है लेकिन थ्योरी रह जाता है, तो थ्योरी इंपॉर्टेंट होता है. इसमें क्या होता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में आपको 70% मार्क्स लाना है ना, तो और उस दोनों में 70% लाना है, तो 70% इज नॉट ए जॉब, इट इज ए चैलेंजिंग, है ना. तो उसमें क्या होता है, जो थोड़ा सा अगर आप कोचिंग ले लेते हैं और अदर या तो कोचिंग लेकर के अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज आप खुद सिलेबस को अंडरस्टैंड करके आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं विदाउट एनी कोचिंग. दैट इज ओपन एग्जामिनेशन. प्लीज टेल मी अबाउट द फीस स्ट्रक्चर. फीस स्ट्रक्चर क्या है? I successfully passed yoga wellness instructor with 86% marks in 2021. I did MA yoga from Singhania University also. I am 56 years old, having experience of teaching since 1986. What is the scope for placement? Okay, just I think since you have the 56 years of experience, I hope placement you just at this age you should motivate to others. Okay, you can guide to others. Okay, it is the thing. If you are looking in perspective of the government point of view, I think I don't know, it depends upon the state. वो स्टेट पर डिपेंड करता है कि आपको क्या स्कोप देता है ना. बट those who are the teenager on the 30-40, there if they get the certificate, there is a huge career also, है ना. तो थोड़ा सा क्या होता है, वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट. आई सॉ इन महाराष्ट्र, if you have the level 3 certificate, they give you the job. मतलब 2 साल से जब से कोविड का सिचुएशन आया है, तो इस तरह का मैं देख रहा हूं कि उस स्टेट में ऐसा डिमांड है. इससे पहले 2020 से पहले हरियाणा में काफी डिमांड था. इवन अभी भी होगा, हमें उतना ज्यादा हरियाणा के बारे में अभी नहीं पता, लेकिन हरियाणा में काफी इसका ह्यूज डिमांड था. इवन गुजरात में इसका डिमांड है. इवन डिफरेंट लोकेशन पे स्टेट में यूजुअली इंस्टीट्यूट जो होता है, इंस्टीट्यूट स्कूल्स और भी जो लोकेशंस होता है जहाँ पे जिम वगैरह में, दे वांट द सर्टिफाइड योगा प्रोफेशनल. They don't accept you have the MA degree and other degree. MA degree और क्या होता है, अगर MA degree है या कोई other degree है या certificate है या diploma है, तो person are getting confused because there is a n number of institution there, and there are n number of way of training, way of communication. They want, क्या है, कोई भी चाहता है कि ऐसा हो कि they should be understanding of the all system, all traditions. चाहे केवल धाम का ट्रेडिशन हो, चाहे बिहार स्कूल ऑफ योग का हो, चाहे एस व्यासा का हो, चाहे मोरारजी देसाई का हो, चाहे देव संस्कृति विश्वविद्यालय का हो,
किसी भी तरह का शारीरिक का चाहता है, चाहे किस या योग मंदिर हो, किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन चाहता है, तो उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. There is a each sort of the tradition has the own यूनिक. देखिए हर एक का अपना अपना यूनिक वे होता है कम्युनिकेशन करने का. जैसे सन सैल्यूटेशन है तो बिहार स्कूलों में अलग है, शिवानंदा में अलग है, इसमें अलग है, थोड़ा थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाता है ना. लेकिन ये जो वाईसीबी है हर एक ट्रेडिशन को एक्सेप्ट करता है और अपने अनुसार पूरे को एक करके एक मतलब वन इन ऑल इन वन. This is called all in one scientifically. Big person has made this syllabus. Even I had also given some input in the examination process. Suggested earlier it was the Quality Council of India. I had suggested for them to give the examination. इस तरह से लेंगे तो that will be benefit for the candidate also, and simultaneously it will be the unbiased examination also. है ना. बिकॉज क्या है, अगर रिटन एग्जामिनेशन में अगर लिखने वाला हो गया ना तो समटाइम्स इट मे बी अनबायस्ड आल्सो. सो दैट आई हैड सजेस्टेड फॉर द गिव द एग्जामिनेशन ओनली एमसीक्यू बेस एंड दे एक्सेप्टेड. इन फैक्ट आफ्टर दैट दे अलॉट and after that entire the Quality Council of India scheme has just taking the examination by the MCQ only. That was after that Quality Council of India, this scheme has make a on yoga certification board, and that is going on. Yes, any more question? And I would suggest, if you like, kindly give the permission. So yeah, my name, already I will share. Either you connect to the host, they will provide you my number and email ID. If any question, please. अस्मिता जी. सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा. प्लीज कि आपने जो ये पूरा सिलेबस, कोर्स, प्रैक्टिकल, थ्योरी बिल्कुल बहुत ही बारीकियों से जो जानकारी दी आपने, तो ये सब सारी जानकारी सिर्फ सरकारी संस्थान, योगा संस्थान या यूनिवर्सिटी के बारे में है या फिर प्राइवेट, सबका रूल रेगुलेशन एक ही है? मैं थोड़ा सा इसको आप थोड़ा डिटेल में आप क्वेश्चन को कीजिए तो मैं आपको अच्छा से जवाब दे पाऊंगा. मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये जो आप जानकारी दिया आपने पूरा तमाम इतना डिटेल, ये सर सिर्फ सरकारी संस्थान मतलब गवर्नमेंट संस्थान या यूनिवर्सिटी के बारे में है, उनके सिलेबस के बारे में है, या कोई हम प्राइवेट संस्थान से करेंगे इस तरह का? तो वो भी इट इज ये जो है इट इज नॉट ए गवर्नमेंट, इट इज नॉट द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ए कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. जी, ये प्राइवेट नहीं है कि वो जैसे इट इज नॉट द कंपनी, इट इज. आप देखेंगे, आप गिव मी परमिशन फॉर शेयरिंग माय स्क्रीन. इफ यू सी the syllabus. This is the thing. Ministry of Ayush. Yes, okay. Yes sir. हाँ, Ayush Mantralaya. Ayush Mantralaya. This syllabus is made by the Ministry of Ayush, and same thing you can see in the each syllabus. This is the syllabus of the yoga therapist. This is the syllabus of assistant yoga therapist. This emblem is there. Ministry of Ayush का जो ये है ना, ये और ये जो है, this is the this scheme is run by the yoga certification board. जी सर, समझ गए. ठीक है सर, थैंक यू सर, समझ. Yeah, it is completely government body. जी, ओके. और कैंडिडेट गेट द सर्टिफिकेट बाय द वो क्या कहते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्बलम के साथ कैंडिडेट गेट द सर्टिफिकेट. मेनी पर्सन गेट द सर्टिफिकेट, दे कैन एक्सपीरियंस द सर्टिफिकेट आल्सो. दे हैव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्बलम के साथ उनको सर्टिफिकेट मिलता है.
there's the good value also, additional value है. अगर क्वेश्चन सबका समाप्त हो गया है तो जस्ट I would like to scope as a yoga professional, because I have the limited time, so that I will focus on that parameter. How to use this certificate for the personal growth. If you, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, otherwise I will come and jump into this parameter, this question point of view. सर मुझे लग रहा है प्रश्न आ चुके हैं, तो आप आगे बढ़े, चर्चा आगे करें, क्योंकि मुझे एक सेकंड, कोई बोल नहीं आपका स्मिता बाबू, अगर आप 1 मिनट दें, अगर है बात कर सकता हूँ. जी रमन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है. सॉरी सर, मुझे लगा आप इनके स्वागत है और क्षमा प्रार्थी भी हूँ. पूरी व्यस्तता के कारण, चूंकि इंटरनेशनल योग डे चल रही है, तो काफी यूनिवर्सिटी में उसके कारण काफी व्यस्त हो गया हूँ आजकल, और कुछ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बदलाव आ गया है. तो आलोक जी को मेरे कोई प्रश्न नहीं है. ये हमारे मित्र हैं, साथ में पढ़े हैं, एक जगह रहे थे, और शाश्वत योग सभा प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत दिनों के बाद बातचीत हुई थी. और इनको हम लोग शुरू से ही योगी जी बोलते थे. ये हमेशा ध्यान और ये सारे में डूबे रहते थे, और ये फिलॉसफी की पुस्तक, मेडिटेशन की बुक, अपने मेन सिलेबस से ज्यादा इनके पास वो इन सारे स्पिरिचुअल बुक होते थे आलोक जी के पास कलेक्शन, और बहुत नीट एंड क्लीन घर को रखते थे, और पूरा उस तरह से मेडिटेटिव माहौल बना के रखते थे. और जैसे उन्होंने बताया कि कंप्यूटर साइंस में आगे किया, लेकिन हम लोगों को लगता था कि ये ठीक है, इधर उधर नहीं कर पाएगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही बढ़ेगा. तो बहुत बहुत आभार आलोक बाबू, आप शाश्वत योग सभा में आए, और जैसे आपका बात हुआ था कि थोड़ा सा कोर्स और इन सारे चीज़ों के बारे में जो टेक्निकल इशू है उस पर चर्चा करेंगे, तो हम बहुत आभारी हैं. आपने अपना कीमती समय दिया, और आगे भी आपका स्वागत रहेगा. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत आभार. थैंक यू रमन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. धन्यवाद सर. यस, धन्यवाद आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमसे शेयर किया, और बहुमूल्य समय दिया आपने. ठीक है, ओके. तो अब हम लोग सभी श्रोताओं का भी बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय निकाला और हमसे जुड़े. 1 मिनट श्वेता जी. जी सर, आप कुछ कह रहे थे कि जो सर्टिफिकेशन को पर्सनल ग्रोथ के लिए कैसे यूज करना है, तो आप बोल सकते हैं सर, क्योंकि हमारा दूसरा सेशन नहीं है आज. वैसे नॉर्मली 9 बजे तक दूसरा सेशन होता है पीएमसी गुजरात का, तो हम लोगों को लीव करना पड़ता है क्योंकि अनुशासन में रहना है. अगर आप चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी, तो अभी नहीं जुड़े हैं लोग, लेकिन जो भी कोई बात नहीं, बारे में जानकारी मांगते हैं, तो हम आगे उन्हें ये सेशन, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे लाइव भी है, तो हम उन लोगों को ये सेशन भेज सकते हैं. तो इट विल बी ग्रेट हेल्प फॉर अस. जी बिल्कुल बिल्कुल. साली, shall I speak about the? Yes, sir. Thank you. Just क्या होता है इस सर्टिफिकेट का, जैसे लाइक मी है ना, तो इस सर्टिफिकेट का पर्टिकुलरली those who want to go to abroad, this certificate gives the very great value for the yoga profession to go to the abroad. Okay, when not one numbers of aspirants is going to abroad through this certificate, certified by the yoga professional, Ministry of Ayush. तो एक ये हो गया, और दूसरा ये है कि अगर आप अपना इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, अगर आप अपना इंस्टीट्यूशन रन करना चाहते हैं, तो दिस इज ऑल्सो ए गुड आई कांट से द बिजनेस, बट एज ए कैरियर कह सकते हैं, है ना. यू कैन टीच एंड यू गिव द प्रॉपर गाइड टू योर कैंडिडेट्स, है ना. एज ए योगा वॉलंटियर के कैंडिडेट को अगर इफ यू आर एफिशिएंट मच, यू कैन गैदर टू द कैंडिडेट्स एंड यू गाइड them and get the certificate. Definitely social cause के लिए भी it will be very benefit होगा. और by the way,
if you want to my contact number, okay, Shalini ji will share or Asmita ji will share to my number to you. You can contact me personally also. This is the thing. और detail में अगर होगा, definitely we will discuss. But I think we have the shortage of time, so that I am just this much I can give you the value addition about the as a yoga professor. And there is a huge opportunity in future is coming for this certificate, and particularly therapy, I'm sure. So that those who want to make a career in this field, I suggest to them kindly either get the certificate of yoga master, yoga teachers, and the evaluator, and the therapeutical yoga therapist, and therapeutical yoga consultant. That will give you the very good value addition in their career perspective as well. Those who want to make a career in the field of yoga. That much I can say. जी. Yeah. Still, if you have any unique question, you can ask. I can reply in brief. Not in. I will not take much time on it. जी बिल्कुल. अभी भी हमारे पास थोड़ा समय है, जैसा कि शालिनी जी ने बताया कि हमें आज कोई उतना जल्दी नहीं है, तो कोई भी प्रश्न और रह गया हो तो जरूर करें. शालिनी जी. हाँ जी सुनीता जी. प्रश्न मेरे ख्याल से अब नहीं आ रहे हैं, तो हाँ जी सर, हम एक्चुअली ग्रुप पे आपका नंबर हम लोग नंबर शेयर कर देंगे. अगर किसी के कोई क्वेश्चन मेरा नंबर है, मैं आपको बोलता हूँ. जी अस्मिता जी, कैन आई शेयर? जी बोलिए. मेरा नंबर है यस सर 97 9717 जी 57 जी 0950. 0950. ठीक. यस, 9717570950. ओके सर, ठीक. ओके, थैंक यू. मैं शेयर कर दूंगी, और जो भी लेना चाहें और इनसे बात, श्योर तमाम इंफॉर्मेशन आपसे ले सकते हैं. जी. Thank you for giving me this wonderful opportunity to interact with the many social, क्या कहते हैं, सामाजिक volunteers से. I respect and so sonorous sang by that madam. That is really appreciable. Thank you very much. Thank you very much to all the participants. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, कि Thank you. आपने इतना कीमती समय निकाला, और हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि आप इतना सुंदर, इतना बढ़िया इंफॉर्मेटिव सत्र लिया आपने. Thank you very much. और अब हम सत्र का समापन करते हैं. आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं. तो अगले सत्र में मिलते हैं एक नए विषय के साथ. सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कीमती समय निकाल के जुड़े हमारे साथ. इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. शुभ रात्रि.